Bonjour, comment ça va? Vous allez bien ou non? Moi, je vais très bien. Et aujourd'hui, c'est le 24 juin 2023, c'est samedi. Et on va discuter comment décrire famille, les adjectifs possessifs, c'est-à-dire en anglais on dit my, your, his, her, etc. Et comment écrire father, mother, brother, sister, etc. en français. Okay, I just said about the date and how are you. I'm doing fine, and in today's class we are going to talk about how to describe family, the possessive adjectives and the relation of how to say father, mother, and related concepts. So here we go. So ma famille, my family. Bonjour, je m'appelle Ajay Sahani. J'ai une famille aimante. So ये मैंने delete किया हुआ है because ये गलती से मैंने कुछ लिख दिया था. So hello, my name is Ajay Sahani, and if you notice I have written my last name in capital letters. So that is what the system in French is. You write the last name in capitals, right? J'ai une famille aimante. I have a loving family. Il y a 4 personnes dans ma famille. Il y a. That's a new expression. That means there are. 4 personnes dans ma famille. 4 members or persons dans ma famille, family. Moi, myself, ma femme is wife. I call my wife as government. Then mon fils, my son, et ma fille. Fille, c'est-à-dire daughter. So they are you, G, H, T, E, R, daughter. Bon, so ma femme s'appelle Kiran. My wife's name is Kiran. Et c'est le deuxième feuille. Mon fils s'appelle Ritik. My son's name is Ritik. Ma fille s'appelle Radhika. My daughter's name is Radhika. Ma femme est femme au foyer ou ménagère. Okay, I use this verb ou. This I had explained in the last videos also. So ou is or. Okay, and if I put grave accent on ou, this becomes where. Où habitez-vous? D'accord? So d'accord is okay. D'accord. Okay. So when I say d'accord, you could say oui, monsieur, no, monsieur, something like that. So idea is to build up your communicative French as well. So the point for noting down is ou is or, and ou with grave accent on u is where. So ma femme est femme au foyer. Ma femme est femme au foyer. Okay, so that is a tongue twister. So my wife is homemaker. Ma femme est ménagère. So that is also homemaker. Either you can use femme au foyer or vous pouvez utiliser ménagère, or you can use ménagère. Both means the same. Elle est belle. She's beautiful. Elle a 54 ans. She is 54 years old. Mon fils a 26 ans. My son is 26 years old. Il est grand et beau.
he is tall and handsome or smart. Ma fille est grande et belle. My daughter is tall and beautiful. Belle is beautiful. Elle a 21 ans. She is 21 years old. J'ai ma famille. Okay. And what is the word for a lot or very much? You remember? So I write it for you here. B, E, A, U, C, O, U, P. C'est beaucoup. A, E, U, on prononce O, et O, U, on prononce U. So EAU is pronounced as O and OU is pronounced as U. Et on ne prononce pas P. So we don't pronounce P. So beaucoup, a lot or very much or a lot. Say how you can describe about your family. Similarly, you can write about your family and practice. C'est la troisième feuille. This is the third sheet. Adjective possessive adjective. So it's equivalent to English my, your, his, her, its. Now remember, I always keep on saying in every video, in every lesson, that the gender concept and then the masculine feminine concept, of course that is the translation of general concept, I mean to say the application part of it. So, and secondly, whether the noun begins with the vowel and consonant, accordingly the grammatical concepts keep on changing. In one of the videos we did share about whenever you have a noun beginning with the vowel, you put L apostrophe and so on. So similarly, French is very important as far as the grammar. Of course, that's for every language. The gender concept, everything is either masculine, feminine, and accordingly the grammatical concepts in this particular context, possessive adjectives, they will change, and that is connecting with the rules of the pronunciation, and to maintain the rhythm of the language, the rules are having exceptions also. So if you're not clear about the gender concept, you won't be able to put the right version of the grammatical concept in this particular context. It is possessive adjective. If you notice, there are three forms of my, your, his, her, and again there are exceptions as well. Now according to that particular form of the noun, the adjective also keep on changing, as we have been discussing every now and then. Like adjectives have three or four forms depending upon the gender, depending upon the noun, again depending upon the noun beginning with the vowel or concept. So we have to be very, very particular on this. Okay, so when we talk about my, now possessive adjective, something which you possess, and adjectives we know by definition are the ones that qualify the noun. So mera, tera, unka, hamara, aapka. So that is the equivalent Hindu of that. So if you see, notice here the first person singular is je, tu, second person, il, elle, third person. So accordingly, corresponding to that, we have three forms of my: mo, ma, me. Your, because this is informal you. So if I want to say informal your, I'll say ton, ta, ti. If I want to say his or her or its, I'll say son, sa, se. Now another way to memorize these possessive adjectives, you can go like this, because they rhyme. Mon, ton, son, ma, ta, sa, me, te, se. Now where to use what? If you notice, masculine singular noun से पहले हम लोग यूज़ करेंगे मो, ton, son. Feminine singular noun से पहले we are going to use ma, ta, sa, and masculine and feminine plural before that we use me, te, se, which relates to my, your,
his, her, its, respectively. Attention. Attention means be careful. Ma, ta, sa changes to mon, ton, son, where the nouns begin with a vowel or h, a, e, o, u, ash. Now here, as we know, as per the rule, ma is used before feminine singular noun. Now what is happening here? We have the noun feminine école, which is equivalent to school in English. It begins with the vowel, so I will not write as ma école, right? Because if I write it as ma école, so you have a vowel here, you have a vowel here. Logically, it will be dropped and you put apostrophe, but this is wrong. I can't say mekol, right? Because we have to respect the very concept we are learning. So to connect this particular word with this one, I'll again use the masculine format. So I'll put mo and it connects with this. So my sound here is monecol. And I can't make a nasal sound here because after N we have a vowel. So monecol. Similarly, if I want to say your school, I won't say ta école. I'll say ton école. So son école. So these three are put before the feminine singular noun beginning with the vowel or h. So जहाँ तक प्लूरल की बात है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्लेश नहीं है. सिर्फ मैस्कुलिन सिंगुलर फेमिनिन सिंगुलर नाउन जो वॉवल से या एच से शुरू हो रहा है वहाँ पर आपको फिर से मैस्कुलिन फॉर्म लगानी है. ठीक है. Now let's see the fourth sheet. You have another form of possessive adjectives which are in plural form. Now when we say plural form, the subject that is being referred to, like nu is we, corresponding to we have our, then we have vous, that is you, corresponding to that we have votre, your, and then we have il and elle, that is their, they, corresponding to that you have their. So in the previous case, while I was discussing about my family, अगर आप यहाँ पर note करोगे, so je m'appelle, मैंने अपने बारे में बोला, it's singular. Now यहाँ पर मैंने बोला ma femme, my wife. So this is feminine, beginning with the consonant, so I'll use ma. But if this would have been a noun जो vowel से या h से शुरू हो रहा है, तो मैं दोबारा से MON पे आ जाता. So when we are applying the possessive adjectives, we have to see the gender of the person, place or a thing that is being possessed, right? अब यहाँ पर son is masculine, so I will use MON. अगर ये vowel से भी शुरू होता तो भी मैं MON यूज़ करता. So अगर मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, हमने वो ध्यान में नहीं रखना है. दैट इज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ जिस पर्सन की बात हो रही है, जो मेरे रिलेटिव हैं, उसका जेंडर क्या है और उसका नंबर क्या है, राइट. सो सिमिलरली यहाँ पे मैंने बोला माई वाइफ्स नेम इज़, तो मैं दोबारा से फेमिनिन पे आ गया, बट यहाँ पे सन मैस्कुलिन है तो मैं मो रखूँगा. नाउ अगर मुझे माई सन एंड डॉटर बोलना है, सो आई विल यूज़, suppose I want to say my children, so I'll use mes enfants, like mes ये connect हो जाएगा e से, so I'll say mes enfants. अब ये plural है ना, so इसलिए मैं mes लगाऊंगा. I want to say my books, I'll write it as mes stylo, because stylo is in plural. So
अगर वन पेन, माई पेन बोलना चाहता हूँ तो देन इट विल बी मो स्टीलो. सो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज. अब आते हैं इसी की एप्लीकेशन पे. अब यहाँ पर बात हो रही है सब्जेक्ट की जो प्लूरल में है. सो वी से बना आवा. इसके दो फॉर्म्स हैं. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन सिंगुलर से पहले हम लोग यूज़ कर रहे हैं नोत्र. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन प्लूरल से पहले हम लोग यूज़ कर रहे हैं नो. इन तीनों दोनों का मतलब है आर और अव. वो के साथ हमारा आएगा वोत्र वो. सेम प्लूरल से पहले वो, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन सिंगुलर से पहले वोत्र. यहाँ पे फेमिनिन मैस्कुलिन का कोई टंटा नहीं है. सो यू विल यूज़ योर फॉर्मल. वहाँ पे तोत आते हमारा इनफॉर्मल योर था. सो यू हैव लर एंड लर, दोनों की साउंड सेम है, but you put an S, that is there. Now let's see the application. Notre maison est grande. अब सिमिलरली जैसे मैंने ग्रांड लगाया, मुझे पता है मेजों इज़ फेमिनिन और विस वर्सा. जैसे भी आप इसको याद करो. आवर हाउस इज़ बिग. नोज enfants sont mignons. My children are cute. Remember, GN is always near. Near as in onion, as in अन्य की साउंड. अन्य हिंदी में अन्य कहते हैं. मीन्यो. नाउ leur père est journaliste, journalist. Their father is a journalist or is journalist. आप इसमें चाहो तो लगा भी सकते हो और चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, बट इसकी ट्रांसलेशन दोनों में सेम रहेगी. Their father is journalist or their father is a journalist. Leur père est journaliste, or you can say leur père est un journaliste. Leurs parents sont sympathiques. यहाँ मैंने गलती करी जान के, ये मैंने S लगाया because parents is in plural. Sympathic, kind. So now see the difference here. अब यहाँ पर father, दैट मीन्स देयर फादर. यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, दो ब्रदर्स के फादर, दो सिस्टर्स के, या एक ब्रदर या एक सिस्टर के फादर. सो दैट मीन्स ये सब्जेक्ट मेरा प्लूरल फॉर्मेट में है, बट फादर एक ही है ना. एक ही. ठीक है जी. तो देन आई वांट टू से देयर पेरेंट्स. सो पेरेंट्स हो गया प्लूरल, लेकिन यहाँ पर मैं जो देयर की बात हो रही है, मैं रेफर कर रहा हूँ दो लोग. That means could be two sons, son and a daughter, or two daughters. So ultimately हमने देखना है सब्जेक्ट से कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए, और उसी के हिसाब से आप जेंडर लगाओगे एंड उसका नंबर अकॉर्डिंगली चेंज करोगे. ओके. अब हम आते हैं जो अलग अलग फैमिली में रिलेशंस होते हैं, रिश्ते होते हैं. सो यू हैव père, father, mère, mother, frère, brother, sir, sister. So OEU is A. Okay. ये हमने रूल पहले भी किया था, बट जैसे मैंने कहा मैं बार बार रीइंफोर्स करता जाऊंगा रूल, सो दैट any video you pick it up, your pronunciation rules are embedded in your mind. So grand-père, grandfather, grand-mère, grandmother. So that means मैंने पैर मैर याद किया, उनके आगे मैंने ग्रॉ लगा देना है, तो वो मेरे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स हो गए. सो सिमिलरली अगर मैं ग्रैंड पेरेंट्स कहना चाहता हूँ, आई विल से ग्रॉ. एंड पेरेंट्स की फ्रेंच सेम है जो हमारी इंग्लिश में है. सो फे आ एर एन थे एस. grand-parents, parents, parents, or parents. Right? Any one of this. So grand-parents. Oncle, uncle. So French में like in English, चाचा, मामा, ताया, फूफा, सब oncle. And aunt,
tante or tante, right? So your chachi, tai, fufi, masi, sab tante. So then in-law concept, आपने बस बो और बेल लगा देना है. Now technically बो का मतलब है smart, handsome and belle is beautiful, but here it is used for in-laws. So beau frère, brother-in-law, belle sœur, sister-in-law, neveu, nephew, and niece is niece. Okay, so similarly you can practice about these concepts that I have discussed with you. So on finit notre cours ici et aujourd'hui on a discuté comment décrire la famille, les adjectifs possessifs et comment dire père, mère, frère, etc. en français. So with that we finish our class today, and today we have discussed how to describe about one's family, the possessive adjective his, her, my, your, and how to say father, mother, brother and sister. Et il faut que vous pratiquiez beaucoup et on rencontre dans notre cours. À demain. Merci. Bonne nuit.